Amma, travel here and travel. Good evening, all of you. After the completion of English paper, I hope you all would have done very good so far as English text paper is concerning. So today I am going to start the revision of maths. You can see one of the doubt or question of statistics that I am going to solve before we start doing the revision of MCQ. The less than and more than type frequency distribution table can be asked. So far it has not been asked in any of the board exam. But number of students were just telling me that it's please solve this. Okay. Let us try to understand the question first. In this question, in exam, you will be given marks, number of students, that is classes and frequencies will be given. And then it will be asked to convert this class and frequency into less than type and more than type frequency distribution table. What it is actually. But before that, first of all, try to understand. Here, marks are given 0 to 10
So there are 5 students scoring marks between 0 and 10, including 0, excluding 10. Listen what I am saying. Including 0, excluding 10. You can see 10 is 2 times. In the first class also and here in the second. So in which class we include 10? In second one. So this class or marks include from 0 to 9. It will be from 0 to 9. This is 10 to 19, 20 to 29 and so on. So what is 5? Number of students scoring marks from 0 to 9. 10, no. 10 will be included in the second class. That 10 to 20, but actually it is 10 to 19. So there are 3 students scoring marks. 3 students scoring marks from 10 to 19. From 10 to 19 and so on. So this is a frequency distribution of marks and number of students. The question is asked to convert this frequency distribution. Hello? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ये क्वेश्चन है, इट इज गिवन, बराबर है, और इसको कहा गया है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करो लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। तो उसका क्या मतलब होगा? तो यहाँ लिखा है लेस देन टाइप में मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 10। तो लेस देन 10 में ये फर्स्ट कॉलम आएगा 0 to 9. So how many students are there scoring marks less than 10? 5 students. Try to understand not that. As I am telling you, this question has so far been not asked in the board exam, but number of students are asking me to solve this. So I am before that. So let us try to solve this, and then I will start according to my point of view, maybe MCQ or some of the doubts from textbook NCERT. Tomorrow also we will continue. I will give you the time also. So let us try to understand. This is less than type, and next to it is more than type. So marks obtained less than 10. So how many number of students? 5. There are 5 students scoring marks less than 10. Next, less than 20. तो ये आ जाएंगे 5 plus 3, 8 students. 5 students are scoring the marks. 5 students are scoring the marks less than 10. Next, less than 20. So how many students are scoring the marks less than 20? So your answer should be 5 plus 3. अब करना क्या है? आपको less than टाइप में प्लस करते चले you have 5, the next 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12. You might be remaining, it is called cumulative frequency. I think that was done in case of median. We first found cumulative frequency. So 5 टाइम कम है तो उस हिसाब से लेस देन टाइम के अंदर एक टेक्निक याद रखें, वैसे समझाया भी है मैंने आपको, आई जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई व्हाट डू मीन बाय लेस देन 50 फॉर एग्जांपल. सो यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50. तो वो ये टेबल तैयार हो रहा है. तो व्हाट इज 5? 5 क्या है? 5 are the number of students scoring marks less than 10. अब एक बार फिर से रिपीट कर दो, 10 दो बार आ इस क्लास में भी है और इसको कंसीडर कौन से क्लास में किया जाएगा? फर्स्ट वन नहीं, सॉरी सेकंड. कहां पर कंसीडर किया जाएगा? सेकंड के अंदर ये कंसीडर किया जाएगा, ये इधर यहाँ पर. तो अब टेक्निक देख लिया कि लेस देन टाइप में आपको प्लस करते चले जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि फर्स्ट 5 देन 5 plus 3 8, 8 plus 4 12. What is 12?
12 is the number of students scoring marks less than 30. तो ये समझ आएगा 5 plus 3 plus 4. तो अब एक सिंपल चीज समझ लो, डिटेल में न जाए कि लेस देन टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होगा बच्चे लोग उसमें हम लोग प्लस करते जाएंगे. समझ में आ गया? प्लस करते जाएंगे. पहला एज इट इज लिख देंगे 5 तो 5, then 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15 and so on. Finish. So less than टाइम में प्लस मोर देन. अब यहाँ क्या लिखा है? मोर देन और इक्वल्स टू 0. क्या? मार्क्स. तो 0 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले मार्क्स कितने स्टूडेंट्स हैं? I repeat, how many students are there scoring marks more than or equals to 0? 0 से ज्यादा. तो 0 से ज्यादा में ये सब आ जाएंगे. All will come. What is 5? 5 students are scoring the marks from 0 to 9. तो 0 से ज्यादा हो. 5 जो है वो 0 से ज्यादा हो. समझ में आ रहा है? फिर से समझने की कोशिश करें. ये क्या लिखा है? more than or equals to more than or equal to 0. क्या? मार्क्स. यानी 0 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले कौन? स्टूडेंट्स. कितने? 53. फिर से 0 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी? ये सब. 5 का मतलब क्या है? 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए. कहां से? फ्रॉम 0 to 9. तो नेचुरली आ जाएगा. ये सब आ जाएंगे. All these students have scored marks. Come on, all these students have scored marks from 0 or more than 0. फिर नेक्स्ट में क्या आएगा? more than or equals to 10. तो वो यहां से स्टार्ट होगा. यहां से तो ये माइनस कर दिया जाएगा. 53 minus 5. What are these? What are they? They are number of students. Come on, focus एक बार. What are they? These are number of students scoring marks. These are number of students scoring marks from 0 or more than 0. Right? How many students are scoring marks 0 or more than 0? 53. फिर लिखा गया more than or equals to 10. तो यहाँ से स्टार्ट होगा. इधर से ये सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे. ये नहीं आएगा. क्यों? इनके मार्क्स 10 से कम है. कितने हैं इनके मार्क्स? लेस देन 10. तो ये सब. तो अब सिंपल भाषा में समझे तो लेस देन टाइप में we have to add. What less than type? We have to add. तो लेस देन टाइप में हम सिंपल इसको क्लियर करें कि अगर क्वेश्चन लेस देन टाइप का है तो प्लस कर देगा और अगर क्वेश्चन मोर देन टाइप है तो माइनस. एक में प्लस एक में. तो एक लास्ट टाइम मोर देन टाइप देख लेते. What do we mean by more than or equals to 0? It means that we have to find the number of students scoring marks. We have to find the number of students scoring marks more than 0 or equals to 0. तो उसमें ये सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे. 53 ये सब. 5 plus 3 8 plus 4 plus 3 ये सब प्लस करोगे तो टोटल कितना होगा? 53. What is 53? These are the number of students scoring marks from 0 and more than 0. फिर आप 53 minus 5. What is 48? 48 are the number of students scoring marks from 10 or more than. Equals to 10 or more than. तो माइनस करते करते तो इस तरह से थोड़ा समझा दिया है. अब हम मेन टॉपिक पर आ जाए. MCQ. ओके, लेट अस बिगिन. इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आप YouTube पर देख सकते हो इसको. चलिए बोर्ड पर करो.
चलिए let us begin. बोर्ड पेपर से एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ. Write down the first one. An unbiased coin is tossed 3 times. An unbiased coin is tossed 3 times. Full stop. What is the probability? What is the probability of getting? What is the probability of getting at least 2 heads? What is the probability of getting at least 2 heads? चलिए एक ही कॉइन है, n अनबायस्ड. n का मतलब होगा ओनली वन. अनबायस्ड का मतलब होता है एक तरफ हेड दूसरी तरफ टेल. शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन के पास जो कॉइन था वो बायस्ड था, उसमें दोनों तरफ हेड थे, इसलिए वो नहीं चलेगा. यहाँ अनबायस्ड का मतलब हेड और टेल दोनों होना चाहिए. अब इस कॉइन को 3 बार उछाला गया, 1 नहीं 2 नहीं 3. 1 बार हेड, 2 बार भी हेड पड़ सकता है, 3 बार भी. इसका मतलब वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज एच एच एच. तीनों बार हेड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है एच एच टी, मतलब 2 में हेड पड़ा, फिर टेल भी आ सकता है, मे भी हो सकता है एच एच टेल हेड, में भी हो सकता है टी एच एच. ये 4 पॉसिबिलिटी. सो नाउ हाउ मेनी टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड? 3 टाइम्स. तो हम पहले, आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी में मैंने कहा सबसे पहले हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर. दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, मे भी तीनों टेल हो सकते हैं, मे भी दस इसकी तरह ही करें, 2 टेल 1 हेड, मे बी जी एच टी और मे बी एच टी टी. तो इस तरह से आप देख रहे हो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स. 8. आई होप यू आर गेटिंग दिस. देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स. अब इसमें पूछा गया है what is the probability of getting at least 2 heads? At least 2. What do you mean by at least 2? So the meaning of at least 2 is that 2 or, come on, 2 or less than 2. At least 2. कम से कम 2. तो कम से कम 2 में कौन कौन आएगा? ये भी एक आएगा, 2, ये एग्जैक्ट 2 है हेड, और ये भी आएगा. At least 2, I'm sorry, 2 or more than 2. I'm sorry to say 2 or more than 2. Total outcomes are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many of them are at least 2? 4. So your answer is 4 upon 8. So it is 1 upon 2. I hope you understand. At least 2 का मतलब समझना, 2 or more than 2. 2 or more than 2. तो 2 और more than 2 हेड्स में ये सब आ गए, बराबर. इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो एक ही बार हेड है, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक. तो आपका आंसर होगा 4 upon 8, 1 upon 2. राइट. चलिए बोर्ड का पेपर इस वक्त मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें. यूट्यूब पर देख लेना है, लिंक में आ जाएगा, आगे पीछे करके समझ लेना, जल्दी हो जाएगा काम. अभी कॉपी करने में टेंशन मत लो. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. verify
whether the pair of linear equations whether the pair of linear equations right now 4 upon 3x plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y is equals to 12 is consistent or not? Is consistent or not? अब आपको बता दें कि when a pair of linear equations are consistent, that is very important. So you might be doing these three conditions. If a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then there is a unique solution, मतलब one and only one. और जब किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट. क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट. सेकंड, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then there are many solutions or infinite. ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. a1 into b1 b2 भी मैं समझाऊंगा किसको बोलते हैं. और थर्ड कंडीशन उसमें होता है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, then there is no solution. So in these two cases they are called consistent. Or third case, if there is no solution, then it is called inconsistent. What is called? Now we have to check. But first, this equation is not in the standard form because of upon. So this is 4x upon 3 plus 2y upon 1 is equals to 8. So to convert it into standard form, we have to take out LCM. Yes, we have to take out LCM. What is the LCM of 3 and 1? The LCM of 3 and 1 is 3. It is already 3 multiplied by 1 and this is multiplied by 3. 4 ones are 4x plus 3 twos are 6y upon LCM 3 cross multiply 4x plus 6y 3 is 24 and minus 24 is equals to 0. This is called standard form. Write down the second equation. 2x plus 3y minus 12 is equals to 0. Now let us check a1 upon a2. a1 upon a2. 4 upon 2, the answer is 2. b1 upon b2. 6 upon 3, the answer is 2. c1 upon c2. Minus 24 upon minus 12. Once again the answer is 2 because minus minus cancel. So all are equal. Therefore it is consistent. What it is? Because there is a condition. If all the ratios are equal, then a pair of linear equation is consistent. I hope you understood this.
Answer is consistent. What the answer is? Because all the three ratios are equal. शायद डाउट पूछा है जगदीश ने, देखो उसको सॉल्व करते हैं। देखो आई थिंक जगदीश ने पूछा है ये, if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial. If alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, p at x is equals to ax square plus bx plus c, then the value of alpha square plus beta square is equals to x. Then the value of alpha square plus beta square is equals to x. Shall we solve that? We know these two formula. Alpha plus beta is equals to minus b upon a. And we also know alpha into beta is equals to c upon a. This is actually alpha plus beta. But the question asked is alpha square plus beta square. तो कोई बोले सर इसका स्क्वायर कर दो, नहीं, वो तो का होल स्क्वायर हो तो, अगर ये ऐसे होल स्क्वायर हो तो ये आंसर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी फॉर्मूला देखिए, मैं देखो इक्वेशन लिखता हूं, आप सब ये आइडेंटिटी जानते हो, a plus b the whole square is equals to a square plus इसको 2ab plus b square, 2ab को इधर ले आओ, so this will be written as a plus b the whole square minus 2ab is equals to, what is left here, a square plus b square. This is a very simple identity. It's right from 7th standard you are learning this, that a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Now take plus 2ab on left hand side, so it will become minus 2ab and this will remain as a square plus, अब आप a और b की जगह रिप्लेस कर दो अल्फा और बीटा, तो ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 into this is alpha into beta is equals to alpha square plus beta square. मिल जाएगा आंसर। कैसे? What is alpha plus beta formula? This is here. So it is minus b upon a the whole square. What is the value of alpha plus beta? Minus b upon a the whole square minus 2 into, yes, very good. What is the value of alpha into beta? C upon a is equals to alpha square plus beta square. What is minus whole square to minus plus? This is b square upon a square minus 2c upon a. एलसीएम ले सकते हैं इसका, a स्क्वायर और a का एलसीएम अभी सिखाया गया क्लास में, अभी थोड़े दिन पहले फर्स्ट लेसन, एलसीएम में होता है कॉमन विद हाईएस्ट पावर, अगर याद हो तो यहाँ हाईएस्ट पावर a स्क्वायर है, सो एलसीएम ऑफ a square and a is a square. Is it a square? Yes, so this should be multiplied by 1. Is it a square? No, so this should be multiplied by a.
सो ये फाइनल होगा बी स्क्वायर माइनस 2ca upon a square is the value of alpha square right now. लिख लो, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सब लिख देना बोर्ड पर से right now. कल भी ट्यूशन चलेगा, अब थोड़े थोड़े इस टाइम पर आपके डाउट्स हो तो मुझे भेज दे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स भेज दे, सब सॉल्व करा दूंगा परसों तक। मैंने भी कुछ डाउट्स निकाले, वो भी सॉल्व करूंगा। It's a nice MCQ. इसी तरह कोई भी MCQ हो आप मुझे भेज दे, मैं कल सुबह से ट्यूशन टाइम पे आपको दे देता हूँ क्या है। कल मॉर्निंग में एक कल फिर मुझे 9th का बैच है, उसके बाद मैं फ्री हूँ पूरा दिन, तो आपको सारे डाउट्स करा दूंगा। आप भेजते रहे व्हाट्सएप में, मेरे पर्सनल ग्रुप पे भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब कॉपी करने में टाइम इसलिए ना वेस्ट करें कि यूट्यूब पर लाइव में आप बाद में भी देख लेना। इसको लिखो आज का नेक्स्ट, if 2 10 square 45 degree plus x minus sin square 60 degree is equals to 2, then find the value of x, then find the value of x। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जिसको आता है या तो जो लास्ट में लिख देगा वो लिख पाएगा इसको। 1045 बहुत सिंपल है, 1045 का वैल्यू होता है 1। कितना, कहां से आया? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ये आपको प्रिपेयर मैंने सिखाया, वो प्रिपेयर लिख देने का पहले, एक लिखो दूसरा पीछे से कॉपी करो, तीसरा लिखो, बराबर। चलिए 1045 का वैल्यू हो जाएगा 1 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या वैल्यू होता है? √3/2। रखिए यहां पर 2 into 1 square plus x minus √3/2 the whole square is equals to 2. What is 1 square? 1. What is 1 square? 1. 2 ones are 2 plus x minus, अब तो आपको आता होगा √3 the whole square 3, 2 the whole square 4, so ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम ले 114 का एलसीएम कितना होगा? 4। क्या फर्स्ट डिनोमिनेटर में 4 है? नहीं, क्यों? एलसीएम 4 का मतलब ये हुआ कि अब सारे डिनोमिनेटर्स में 4 होना चाहिए, पहले में नहीं है। So first denominator should be multiplied by 4, second by 4, and this already 4, so 1. 4 2s are 8 plus 4x minus 3 1s are 3 upon 4, that is LCM 2. इसका क्रॉस में don't cancel this because of plus 4 2s are 8, 8 minus 3 5 plus 4x is equals to 8.
What we have to find? X. So let us shift 5 on right hand side. So you will get 4x is equals to 8 minus 5, 3. So you will get x is equals to, write down, 3 upon 4. Fine. X. चलिए हो गया। अब एक सम जो है अभी करा हम एमसी कर देंगे। एक्चुअली ये सेक्शन बी में पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक लेके। The next sum that I am going to solve of quadratic equation has been, or this type of sum, these types of sum has been asked 2 or 3 times for the last 4 papers. So I think this is important. Write down and let us solve. Find the roots of quadratic equation. Find the roots of quadratic equation. Square root 2 into x square plus 7x plus 5 root 2 is equals to 0. लिख लो। अब ये ऐसे 2-3 साल पूछे गए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया और कल सुबह लगभग मैं टाइम मॉर्निंग पर करूंगा और मैं फिर बाद में एडजस्ट करके लिख देता हूँ ग्रुप में। चलो बच्चे लोग, ये एमसीक्यू नहीं है। दिस इज अ question of 2 marks asked in section B for at least I think 3 times in the last 4 papers of board. So I think it is important. Let us try to solve. We have to find roots of quadratic equation. That means it's a question of quadratic equation and the method factorization. You know there are 2 methods to find the roots. One is a factorization method and another is a formula method. Alpha is equals to minus b minus square root d upon 2a. D means discriminant. Okay? Factorization में आपको मालूम है there are 3 terms. 1, 2, 3. तो आपको मालूम है 3 terms में जनरली 10th में एक ही मेथड फैक्टराइजेशन की चली और उसका नाम है splitting the middle. इसको मल्टीप्लाई करें रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2. What is root 2 into root 2? 2. 2 5s plus 10. Most important is sign लिखना है plus 10. 10 के तो 2 ही फैक्टर है 5 2s are 10. 5 plus 2 आंसर आ गया कितना 7. 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है 5. उसके आगे साइन कहां से आएंगी मिडल टर्म की साइन कौन सी है प्लस इनटू प्लस हां के ना क्या डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर चलो लेट अस स्प्लिट द मिडल टर्म कम ऑन स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस वेरी गुड 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. यहां से सिर्फ x कॉमन निकलेगा. यहां से ये व्हाट इज दिस 2 एंड व्हाट इज दिस रूट 2 कुछ सिमिलर है लिख सकते हैं. सम हो गया है इसको थोड़ा चेंज करके लिखे so that we can take out common root 2x square as it is plus 5x. 2 can be written as root 2 into root 2 because what is root 2 into root 2
2, तो ये कॉमन निकल जाए, इसलिए ये कर रहे हैं। तो √2 into x प्लस 0। चलिए फर्स्ट टू लास्ट। अब इसमें कॉमन सिर्फ निकलेगा x, x कॉमन, ब्रैकेट √2x प्लस 5, यहां से कॉमन निकलेगा √2। देखो आप देखो, √2 कॉमन प्लस √2 कॉमन, डायरेक्ट कॉपी करो, √2x प्लस 5 is equals to 0, common one time common brackets, you can write √2x plus 5 into x plus √2 is equals to 0। तो रिवीजन हो रहा है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट होगा। जरा बात इतनी लॉक है कि समझते रहे, लॉक है कि लॉक हो तो कोई इश्यू नहीं देखना। चलो, this can further be written as √2x plus 5 is equals to 0 or x plus √2 is equals to 0। बच्चों हम क्या ढूंढ रहे हैं? रूट्स, और रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ प्लस 5 को उधर दे दो। सो √2x is equals to -5, so x is equals to, इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये उधर चला जाएगा तो you will get x is equals to minus, so these are two roots right now, so is over। Very nice question। चलिए चलो नेक्स्ट, लिख जाओ तो भूल करे, रह जाओ तो फिक्र नहीं करने का, यूट्यूब पर देख ले, इसका टाइम बच जाएगा। अब कल सुबह में एक बना के थोड़े थोड़े सेशन रखूंगा, आप अपने डाउट्स बेशक भेज दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। कल का टाइम में रात तक भेजता हूँ आपको, और चूक भी जाए तो टेंशन नहीं है, यूट्यूब में देख लेना, फिर इसको टेंशन मत रखना। चलिए स्टार्ट, maybe the next one, the sum of your board paper में section B, the sum of the squares of the squares of two consecutive sum of the squares of two consecutive odd positive integers is 650 full stop
find these numbers. Find these numbers. First stop. Last and final some time हो जाएगा. अब सुनिए dear students, यहाँ पूछा गया है नंबर्स, लेकिन नंबर्स कैसे है? दो चीजें, एक तो कॉन्सेक्यूटिव है, दूसरा आगे एक वर्ड डाल दिया है ऑड कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव. तो समझे आप? अब देखो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ये होते हैं 1 2 11 12 15 16, इसको कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं. और दो में डिफरेंस 1 का रहता है. मान लो एक 1 है तो दूसरा होगा 1 प्लस 1 ये होगा 11 प्लस 1 ये होगा 15 प्लस 1. तो मान लो ये x होगा तो दूसरा होगा x प्लस 1. कब? अगर सिर्फ ये वर्ड हो कॉन्सेक्यूटिव, तो यहाँ एक दूसरा वर्ड डालते हैं ऑड कॉन्सेक्यूटिव. तो ऑड कॉन्सेक्यूटिव में आप देखो ये लिखा हूं मैं 1 3 7 9, ये ऑड नंबर्स. कोई पोजीशन ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? तो ऑड नंबर्स वो होते हैं which are not divisible by 2, which are not divisible by प्राइम नंबर्स. दिमाग में मत चलाना, उनकी डेफिनेशन अलग है. ऑड और इवन नंबर उसे कहते हैं which are divisible by 2. तो ऑड नंबर्स आर those which are not divisible by 2. मैं कुछ एग्जांपल्स दिख रहा हूं 11 13. तो ये दो में डिफरेंस देखो आप कितने का है? 2 का है. यहां देखिए आप 1 2 11 12 एक का डिफरेंस है. तो इनको सिर्फ इनको कहा जाएगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. कौन से नंबर्स है ये? लेकिन ये है ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? तो यहाँ एक नंबर के बाद जब दूसरा आएगा तो डिफरेंस इज ऑफ 1, यहाँ एक के बाद जब दूसरा आएगा तो डिफरेंस इज ऑफ 2. अंडरस्टूड के बाद 2. तो मान लो ये x, तो बाजू वाला कितना होगा बोलो? ये x तो ये x प्लस 1 होगा. एक का डिफरेंस है ना, एक का डिफरेंस है. तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2. तो ये x तो ये कितना लिख सकते हो? x प्लस 2. जैसे ये 11 देखना, ये 11 तो ये 11 प्लस 2 कितना होगा? 30. आई बस मान लो ये 15 तो ये 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17. तो व्हाट इज 15 एंड 17? व्हाट आर दे? ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. पॉजिटिव तो छोड़ो, ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. तो हमारा पहला नंबर होगा x. सपोज द फर्स्ट ऑड consecutive number x, therefore the second odd consecutive number will be x plus 1. नहीं है, अगर x plus 1 लिखते हो तो फिर ये odd में नहीं आएगा, consecutive होगा. समझ में? odd में एक नंबर के बाद दूसरे में डिफरेंस कितने का है? 2 का है. कितने का है? 2. चलिए सपोज होने के बाद इक्वेशन बनेगा. पढ़ो अंदर क्या लिखा है? sum of squares, sum of the squares of two odd squares. तो x का स्क्वायर लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिखा जाएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर. टोटल दिया होगा कितना है? 650. यहाँ एक आइडेंटिटी होगी a plus b the whole square. The answer is a square plus 2ab plus b square. X square plus x square will become 2x square. 2 2s are 4x. 2 square 4 is equals to 650. Standard form करना पड़ेगा. 2x square plus 4x plus 4 minus 650 is equals to, therefore 2x square plus 4x, like terms है 4 minus 650 बोलो
कितना होगा 4 माइनस 650 माइनस 646 इज इक्वल्स टू 0। सम इजी हो सकता है, कॉमन निकलेगा यहाँ से। व्हाट इज कॉमन? 2 ब्रैकेट में x² प्लस 2x, राइट, इज इक्वल्स टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 निकल जाएगा। इसको आप क्या कर रहे हो? स्प्लिटिंग द लिख लो। चलो बस तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हम कल मिलेंगे टाइम बाद में ऐड कर